Hello everyone, very good morning. So I'm back again with the daily current affairs session. So in today's session, we are going to have some very important news again. And with that, we are going to have some important questions. So without any delay, let's just begin today's session. Okay? Yeah. So the first news article that we have today is that the Union Environment Ministry proposed to soften the provision of the EPA Act by replacing a clause that provided for the imposing violators with one required that only requires them to pay a fine. So this is the news that we are going to see now. Okay. So let's just try to understand what is this EP Act. This is basically Environment Protection Act. So we are going to see what are the things, what are the provisions which are there, and what are the changes or what are the requirements basically that we are going to see in this. Now, basically, first we are going to see that what is the Environment Protection Act 1986. So this act was actually passed under Article 253 of the Constitution, which empowers the center to enact laws to give effect to international agreements signed by the country. So ये जो लॉ है ये आर्टिकल में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 253 में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको एम्पावर करता है कि वो ऐसे लॉज इनेक्ट कर सकते हैं जो कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जो भी कंट्री ने साइन किए हैं उसको इफेक्ट में ला सके इन द कंट्री. सो इट्स लाइक दैट कि बाहर जो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट ट्रीटीज वगैरह जो भी साइन किए हैं उसको कंट्री में भी तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. बाहर तो दे हैव साइंड एंड नाउ कम. सो व्हाट दे विल डू नाउ, they will have to make some laws, they will have to enact some laws जिससे कि जो एग्रीमेंट साइन की है उनकी रिक्वायरमेंट्स को कंट्री में फुलफिल किया जा सके. तो ये जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसी से रिलेटेड है कि कैसे जो इम्प्लीमेंटेशन है कंट्री में वो होगा उन सारी साइन की गई इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का. और ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ये है कि आर्टिकल 253 में है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Now, the purpose of the Act is to implement the decision of the UN Conference on the Human Environment. क्या पर्पस है इस एक्ट का? मेनली इम्प्लीमेंट करने हैं जो भी डिसीजन यूएन कॉन्फ्रेंस में लिए गए हैं ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट से रिलेटेड, because it is talking about environment protection. The Act is talking about environment protection. So, the purpose of this Act is to इम्प्लीमेंट जो भी डिसीजंस है यूएन कॉन्फ्रेंस की ह्यूमन एनवायरनमेंट से रिलेटेड वो इम्प्लीमेंट करना है. इज द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट. दे रिलेट टू प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड द प्रिवेंशन ऑफ hazards to human being, other living creature, plants and properties. ये बेसिकली रिलेटेड है प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट से, जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे जो भी हैजार्डस थिंग्स हैं उनसे प्रिवेंशन, जो भी बाकी जो अन्य जीव जंतु हैं हमारे प्लैनेट पे उनके लिए, प्लांट्स एंड प्रॉपर्टी के लिए. इट वाज इनेक्टेड इन 1986. सो ईयर्स याद करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है. On the backdrop of Bhopal gas tragedy. So, Bhopal gas tragedy जब हुई थी उसके ही टाइम पे उसके बाद ही this was actually enacted. The act was last amended in 1991. So last amendment इस particular act को कब हुआ था? 1991. So बहुत टाइम हो गया इसमें कोई amendment हुए 1991 में इसका लास्ट जो है amendment हुआ.
Okay, so now we will try to understand that what this act talks. Okay, so the act is an umbrella legislation. So it's like an umbrella term for a particular theme. So यहाँ पे क्या theme है? Environment. Okay, that has provided a framework for the environmental regulation regime in India. Okay, so it covers all major industrial and infrastructure activities and prohibits and regulates specific activities in coastal areas and eco-sensitive areas. So जितनी भी मेजर एक्टिविटीज हमारी रहती हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, उनको रोकता है एंड रेगुलेट करता है. अब जैसे ऐसा नहीं है कि कहीं भी जाके इंडस्ट्री बना दी, डिफॉरेस्टेशन कर दिया. सो ऑल दीज एक्टिविटीज इट विल प्रोहिबिट एंड रेगुलेट कि कहाँ पे एक्चुअली इट शुड बी बिल्ड, जहाँ पे कम से कम जो एनवायरमेंट है उसको नुकसान पहुंचे, जो भी कोस्टल एरियाज है या फिर जो बहुत ही सेंसिटिव इकोसिस्टम्स है, वो सारी चीजों की ये को कवर करता है ये पर्टिकुलर एक्ट, कि उनको कैसे प्रिवेंट किया जा सके और कैसे ठीक तरीके से रेगुलेट किया जा सके. The Act also provides for coordination of the activities of various central and state authorities established under the other environment-related laws, such as the Water Act and the Air Act. So, इस एक्ट का एक और बहुत इम्पोर्टेंट काम है कि ये कोऑर्डिनेशन का काम करता है ऑफ द एक्टिविटीज जो सेंटर की है और गवर्नमेंट की है, उनकी एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन रहे, एंड जो भी उनके एनवायरमेंट रिलेटेड लॉज हैं, ओके, स्टेट्स के या गवर्नमेंट के, उसमें ठीक से कोऑर्डिनेशन चलता है. सो एग्जाम्पल के लिए वाटर एक्ट एंड एयर एक्ट दे हैव. सो एनी एक्ट which is related to environment, जो सेंटर एंड स्टेट अथॉरिटीज ने एस्टैब्लिश किया, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इज वन ऑफ द वर्क्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट. Now, what are the key provisions of this particular act? The Environment Protection Rules lay down procedures for setting standards of emission or discharge of environmental pollutants. Okay, so procedure ये जो particular act है, ये procedures और एक standard set करता है, बताता है कि किस quantity में जो एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट है दे कैन बी डिस्चार्ज, और इतनी इससे ज्यादा क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए. सो ऑल दीज थिंग्स कि जो पोल्यूशन है उसका लेवल बढ़े ना, इसके लिए ये जो है रूल्स बताता है. The objective of hazardous waste management and handling rules 1989 is to control the generation, collection, treatment, import, storage, and handling of hazardous. So, जो hazardous waste management and handling rule है 1989, ये basically control करता है जो waste, hazardous waste है, उसकी वो कितना generate हो रहा है, कैसे collect हो रहा है, कैसे उसे treat किया जा रहा है, कहाँ इम्पोर्ट किया जा रहा है, स्टोरेज अगर हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ऑल दीज थिंग्स इट हैंडल्स. द मैन्युफैक्चर, storage and import of hazardous rules define the term used in this context and set up an authority to inspect once a year. So for this particular thing, जो manufacturing, storage and import of hazardous rules है, इसके अंदर एक अथॉरिटी सेटअप की जाती है जो कि देखेगी कि वो ठीक से काम हो रहा है या नहीं, वो साल में एक बार इंस्पेक्ट करेगी. The cell rules 1989. So all these actually comes under this thing, environment. The cell rule 1989 were introduced with a view to protect the environment, nature, and health in connection with the application of gene technology and microorganisms. Okay, so जो cell rules हैं 1981 में वो introduce किए गए थे with a view to protect the environment.
ताकि जो एनवायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, नेचर, हेल्थ, इन सबके इन सबको प्रोटेक्ट किया जा सके इन कनेक्शन विद जीन टेक्नोलॉजी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Okay, so with this we come to an end to this particular news. इसमें सबसे important क्या है कि जो Environment Protection Act है वो किस बारे में है. इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड अम्ब्रेला लेजिस्लेशन लॉ कौन सा है या एक्ट कौन सा है. देन ऑल्सो दिस विल बी द आंसर. कौन से आर्टिकल में है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या इसकी की प्रोविजंस है, ये एक्ट क्यों बना था. ऑल दीज थिंग्स कुड बी आस्क्ड. Now with this we come to end to that particular news. Now we have another news. Let's try and understand. So India's services firms saw growth in new business and output accelerate to a 11-year high in June. As per the survey-based S&P Global India Services Purchasing Manager Index. So there is this particular index. Okay. So we are trying to understand this purchasing managers index. What is this? And इसके according जो इंडिया की जो services है उसमें growth आई है in new businesses and output acceleration में 11 साल में अभी तक की जून में जो है सबसे ज्यादा acceleration आया है, मतलब growth आई है. And it is basically based on a survey. So we will try to understand this particular news. Okay. So let's try and understand what is this news holistically. So the index rose to 59.2 last month from 58.9 in May, signaling a strengthening in demand across the service sector, which has borne the brunt of the COVID-19 pandemic. So after May it was 58.9, but in June it has turned to be 59.2, which is the highest. So जो सर्विस सेक्टर है उसमें कहीं ना कहीं डिमांड को और उसकी जो इंक्रीज है उसको दिखाता है आफ्टर कोविड, because service sector is increasing in this way. Now purchasing managers index, what is this index? We will try to understand. PMI. So PMI is an indicator of business activities both in the manufacturing and service sectors. So this indicator, PMI indicator, is not just related to one sector, but it is related to both the manufacturing and service sector. This is important from your exams perspective. You must be aware of this thing. This is related to both manufacturing and service sector. It is a survey-based measure that asks the respondents about the changes in their perception of some key business variables from the month before. So it is basically a survey-based measure that happens. Survey करते हैं इसमें, और जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं सर्वे के, उनसे पूछा जाता है कि उनका क्या परसेप्शन है चेंजेस जो दे हैव सीन इन दी बिजनेस वेरिएबल्स इस मंथ एंड लास्ट मंथ में क्या चेंजेस उनको लगते हैं. Then it is calculated separately for the manufacturing and service sector, and then a composite index is constructed. So ये जब calculate होता है separately calculate किया जाता है manufacturing and service sector दोनों का, and then a complete composite compact index जो है वो बनाया जाता है. The PMI is compiled by IHS market based on responses to questionnaires sent to purchasing managers in a panel of around 400 manufacturers. So basically, it is it collects responses in a way that they prepare a questionnaire which is sent to like 400 manufacturers, and then the questions are being answered by them, and they collect it, and the survey is done.
Then also they try to analyze the result. Now, how is this PMI derived? So PMI is derived from a series of qualitative questions. Very important. It is always having qualitative questions. Executive from a reasonably big sample, running into hundreds of firms and asked whether key indicators such as output, new orders, business expectations, and employment were stronger than the month before and are asked to rate them. So, जो भी लोग इसे fill कर रहे होते हैं questionnaire को, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये जो क्वेश्चन है लिमिटेड नहीं होते, काफी बड़े जो फॉर्म्स होते हैं वहां से ये सैंपल कलेक्ट किया जाता है और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आउटपुट पे, न्यू ऑर्डर्स कैसे आए, क्या बिजनेस एक्सपेक्टेशन थी वो फुलफिल हुई या नहीं, और जो एम्प्लॉयमेंट था वो अच्छा था इस मंथ पिछले मंथ से या नहीं. तो ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर देयर व्हिच आर qualitative in nature and they are asked and they have to rate it. How does one read the PMI? A figure about 50 denotes expansion in business activity. Another below 50 denotes contraction. So it's like a scale. So जो 50 होगा expansion दिखाएगा, 50 के नीचे जितना भी होगा वो midpoint, greater the expansion और contradiction. And 50 के जितना ज्यादा ऊपर होगा उतना ज्यादा expansion होगा, 50 के जितना नीचे होगा उतना ज्यादा contraction होगा. The rate of expansion can also be judged by comparing the PMI with that of previous month's data. So इसमें क्या होगा, जो रेट ऑफ एक्सपेंशन होगी या रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगी उसको आप कंपेयर कर सकते हो जो भी लास्ट मंथ का रिजल्ट रहा होगा उससे. उससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली कितना रेट ऑफ एक्सपेंशन रहा या कितना रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है. If the figure is higher than the previous months, then the economy is expanding at a faster rate. अगर जो फिगर है, जो भी डेटा आया है वो ज्यादा है प्रीवियस मंथ से, तो ऑब्वियसली जो इकोनॉमी है वो एक्सपेंड कर रही है अच्छे तरीके से. If it is lower than the previous month, then it is growing at a lower rate. और अगर ये कम है तो ये लोअर रेट पे बढ़ रही है. ऑब्वियसली एज वी डिस्कस कि अगर 50 से ऊपर है तो एक्सपेंशन है, 50 से नीचे है कॉन्ट्रैक्शन है, और अगर लास्ट मंथ से नीचे है तो कम हो रहा है, अगर लास्ट मंथ से ऊपर है तो ज्यादा हो रहा है. नाउ व्हाट आर इट्स implications for the economy? The PMI is usually released at the start of the month, much before most of the official data on industrial output, manufacturing and GDP growth becomes available. So ये काफी ही जल्दी स्टार्टिंग में मंथ में ये जो है रिलीज हो जाता है किसी और डेटा की अवेलेबिलिटी से पहले. It is therefore considered as a good leading indicators of economic activity. So because it comes quite earlier, तो काफी अंदाजा लग जाता है और ये एक अच्छा इंडिकेटर माना जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी. Economists consider the manufacturing growth measured by the PMI as a good indicator of industrial output, for which official statistics are released later. So, जो economists है उनका मानना है कि जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो मेजर की जाती है इंडेक्स से वो काफी अच्छा इंडिकेटर होता है इंडस्ट्रियल आउटपुट का. एंड जिसके की जो स्टैटिस्टिकल डेटा होते हैं वो ऑफिशियल स्टैटिस्टिकल डेटा वो बाद में रिलीज किए जाते हैं. Central Bank of many countries also use the index to help make decision on interest rate. और बहुत से देशों की जो सेंट्रल बैंक है वो इसी का डेटा PMI इंडेक्स PMI का ही डेटा यूज करके
डिसीजन लेती है इंटरेस्ट रेट का, बढ़ाना है, कम करना है, उतना ही रखना है, ऑल दोस. Okay, so with this, we come to an end to this news also. Now, the next news that we have is one of the very important news that we are having these days. So, women mathematician from Ukraine wins fields matter. So, this is very small news, but I thought this is very important one, so I brought it. Now, field medal. The field medal often described the Nobel Prize in mathematics. Okay, so you may have such question like which medal is called as Nobel Prize in mathematics, or ulta bhi pucha ja sakta hai. So this is important. Is a prize awarded to mathematicians under 40 years of age at the International Congress of the International Mathematical Union. So ये एक international award है. ओके, मैथमेटिक्स में ये जो 40 years के अंदर के लोग हैं उनको दिया जाता है. So this International Mathematical Union is an international non-governmental and non-profit scientific organization. So ये जो International Mathematical Union है, okay, so जो कि ये medal देती है, they are completely non-profit, non-governmental organization. Now, who has won this field medal? So Ukrainian mathematician Maria Vyazovska has been named. Names are so difficult to give the correct pronunciation in another language. Marian Vyazovska, okay, has been named as one of the 4 recipients of the 2022 Field Medal. So you have to remember the name Marina Vyazovska. Okay. So this lady is from Ukraine, and she has got this medal of Fields Medal, and this is also known as the Nobel Prize in Mathematics. Okay. So yes, I important cheese is particular news related. Now we have another important news. Let's try and read. This article is analyzing the tuberculosis disease, the tuberculosis control program, and challenges involved in controlling tuberculosis. Okay. So let's try and understand this particular news. This is one of the very important thing to have understanding of. Now, what is the background? So, among all the endemic diseases, tuberculosis is considered the worst. According to data by the World Health Organization, it kills approximately 1.5 million people every year. 1.5 million, which is huge. TB affects the adults in their most productive years and leads to the impoverishment of the family as well as the nation. Now, ये जो TB की disease है, ये one of the worst disease consider की जाती है, जिससे कि approximately हर साल 1.5 million people की death हो जाती है, which is huge. और ये जो है सबसे ज्यादा adults को affect करती है, and in the most productive year, मतलब जब वो adults होते हैं, तो वो age जब they have a lot of things to do, they have built their career, they have to study, they have to take care of their family, and in those years ये बीमारी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, and कहीं ना कहीं ये family को बहुत ज्यादा, because the death rate is so high from this particular news, so जो family है और जो nation है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इस बीमारी से इफेक्ट करती है. So in the context of India, which is known as the TB capital of the world, more than 1,400 persons are killed every day due to TB. So can you just imagine? पहली बात तो इंडिया को TB capital of the world बोला जाता है. Okay. So TB capital of the world, which country? India. याद रखना important है. उसके अलावा हर रोज
1400 लोग करीबन टीबी की बीमारी से मर जाते हैं इंडिया में. These estimates are gross estimates. There is no method to count the exact number in our health management system. So ये एक estimation है कि इतने लोग मरते हैं, 1400 लगभग मरते हैं. बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, एंड इट इज नॉट ऑल्सो पॉसिबल टू काउंट द एग्जैक्ट नंबर, राइट. तो बहुत से लोग तो ऐसे होंगे कंट्री में जो those who cannot afford to go to hospital, या फिर जिनको अवेयरनेस नहीं है. ऑल्दो वी हैव सो मेनी फ्री प्रोग्राम्स, गवर्नमेंटल हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, बट देन ऑल्सो देर आर सो मेनी पीपल जो जिनका डायग्नोस ही नहीं हो पाता है, एंड दे जस्ट डाई because of the poor infrastructural facility, because of their poverty and all those components, because of lack of awareness. So all these things. Now, measures taken to control TB in India. Let's just see this. This is important. During the 1950s and 1960s, India was globally leading the research in the epidemiology, transmission, and domiciliary treatment of TB. So this is basically 1950s and 1960s. The National TB Control Program of 1962 was a district-based public-private partnership initiative. So then in 1962, एक TB control program start हुआ, National TB Control Program, और ये district-based public-private partnership initiative था. However, upscaling the model proved unsuccessful and it failed to control TB. So ये जो program था 1962 का, but it actually could not succeed and ये drastically fail हो गया TB को control करने में. After that, India lost self-confidence and started following the directives of WHO under the revised National TB Control Program. So then उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ये बुरी तरीके से फेल हो गया था इनिशिएटिव 1962 का. उसके बाद इंडिया ने जो भी डायरेक्टिव्स होते थे WHO को, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, उसको ही दे यूज्ड टू फॉलो, और इसको फिर रिवाइज नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर सारे वही रूल्स थे जो कि WHO के होते थे, एंड दे स्टार्टेड फॉलोइंग इट. So without considering the difference between the rich and poor countries, the WHO experts use a theoretical construction of TB control to design RNTCP. RNTCP is what? Revised National TB Control Program. Up for a country, WHO is giving a recommendation to all the countries. अब सारी countries के पास same infrastructure नहीं होगा, same size of population nahi hogi, so it becomes very difficult to implement the same thing in all the diverse countries. अब कोई country बहुत rich है, उनके लिए easy है, population भी कम है, easy है. कोई country poor है, उसकी population भी बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से बीमार लोगों की संख्या भी ज्यादा है. So all these things affect a lot. So difference को ध्यान में रखना is very important. In 2018, India realized that the program is not sufficient to control TB. और 2018 में ये realize हुआ इंडिया को कि ये program sufficient नहीं है TB control करने के लिए. Now, what are the flaws in this program? क्या कमी है? एक तो monitoring नहीं है. The program is heavily funded by the government, but there is no prescribed method of monitoring the trajectory of the TB control. भाई monitoring करना is very important. फंडिंग कर दी, सारी फैसिलिटीज दे दी, बट एक्चुअली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? जो चीज जिस चीज के लिए दी गई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस चीज के लिए दिया गया है, वो इस्तेमाल हो रहा है नहीं हो रहा है? All these things are very important. In the National AIDS Control Program, the Indian Council of Medical Research has established a specific task force that has a unique method named sentinel surveillance to monitor the control trajectory. So जो ये AIDS control program है हमारा इंडिया का, उसमें तो they have this sentinel surveillance जो कि control करता है, monitor करता है,
देखता है पूरा कि भाई प्रोग्राम ठीक से वर्क कर रहा है या नहीं, बट इन टीबी वाले केस में ऐसा कोई प्रोग्राम है नहीं अभी तक, ऐसी कोई मेथड नहीं है जिससे कि सर्वेलेंस की जा सके, मॉनिटर किया जा सके. The WHO experts told to abandon it, but the then Director General of ICMR, Dr. Sriram P. Tripathi, refused to follow this. Okay, so they actually refused कि नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, we will keep working on. So recently India objected to the WHO estimates of COVID-led deaths in India. Similarly, the flaws of RNTCP should also be pointed out and the country's own strategy should be designed. So now what should happen actually? Country level पे इसका work करना जरूरी है, because WHO whatever guidelines they will give, that can be beneficial to some countries and not to some countries, because every country is diverse. हर कंट्री का साइज अलग है, पॉपुलेशन अलग है, मतलब डेमोग्राफी इज डिफरेंट. ऊपर से इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स, वो सब भी सारी कंट्रीज के अलग है. तो नाउ कंट्री की ओन स्ट्रैटेजी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर एरिया. Now another thing which is actually making this particular program flawed is no people participation. The WHO has ignored public participation in RNTCP. Under the AIDS control program, public education was prioritized because due to lack of public awareness, stigma, and delay in seeking help will continue. लोगों के पास अवेयरनेस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर लोगों को अवेयर नहीं किया जाएगा किसी भी चीज के रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं फिर वो जो प्रोग्राम है उसके फ्लॉप होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं. सो इन टर्म्स ऑफ एड्स प्रॉपर एजुकेशन दी जाती है, प्रॉपर अवेयरनेस दी जाती है, बट व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर टीबी कंट्रोल प्रोग्राम, एक्चुअली ऐसे कुछ नहीं किया गया. Now TB control. Treatment of microbled diseases includes 3 measures: control, eliminate, and eradicate. So there are 3 measures, या तो control, या तो eliminate, या eradicate. Now what is control? Control means the reduction in the burden of disease through intervention at a predetermined level and a pre-stated time. Wait, give me a second. Yeah. So जब हम कंट्रोल की बात करते हैं, then we talk about जो डिसीज का जो बर्डन है उसको कम करना है कुछ बाहरी इंटरवेंशन करके, इनिशियल स्टेज पे बेसिक. According to the social trend, diseases that contain social determinants decline over time through better housing, nutrition, education and income. So ये देखा गया है कि ऐसी डिसीजेस जो होती हैं जो कि सोशल कहीं ना कहीं जो हमारे आसपास के वातावरण की वजह से हो जाती हैं, तो वो अगर जो हाउसिंग, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, ये सब चीजें अगर बेटर की जाए तो वो चांसेस होते हैं कि ठीक हो सके. द बर्डन ऑफ टीबी हैज बीन फॉलिंग बाय 1% to 1.5% पर ईयर ग्लोबली. एंड इसके थ्रू जो इसका जो टीबी का जो लेवल है वो कहीं ना कहीं कम हो रहा है, विच इज 1.1% to 1.5%. However, evidences should show that reduction happens because of intervention at the predetermined and pre-stated time and not due to social trend. Okay, so actually there should be evidences जो कि ये बताएं कि जो इंटरवेंशन रिडक्शन जो हो रहा है वो इंटरवेंशन जो इनिशियल स्टेज पे होता है, इनिशियल टाइम फेज में होता है, उसकी वजह से हो रहा है और सोशल ट्रेंड की वजह से नहीं हो रहा. Now, what is elimination? It implies zero frequency of new cases. So, in the case of India, latent TB is found, hence, we cannot
completely eliminate TB, what we can aim for a high level of control by reducing the numbers from 200 lakh per year to 50 lakh per year. So इम्प्लीमेंट दिस एलिमिनेशन मीन्स कि फ्रीक्वेंसी उसकी जीरो हो जाए, मतलब जितने केसेस बढ़ रहे हैं वो एकदम से कम हो जाए. तो just in case of India it is very difficult, but at least the level can be controlled, रिड्यूस किया जा सकता है. जैसे 20 लाख है तो 20 लाख पर ईयर से 50 लाख पर ईयर तक एलिमिनेट किया जा सकता है. This will align with the Prime Minister's vision of eliminating TB by 2025. Important, very important. Now, what is eradication? We can aim for high control as we have measured assets by way of the NTCP. Now, states and districts have highly trained TB officers that are doing their jobs very well. Once the flaws are addressed, India will be able to control TB. So eradicate में क्या कि बीमारी को कंट्रोल करना है, खत्म करना है. जो भी लोग इससे ग्रसित हैं उनको ठीक से उनकी देखभाल करनी है, उनका इलाज करना है, बीमारी को खत्म करना है. तो अगर ये सारे जो फ्लॉज हैं अगर उनके ऊपर वर्क किया जा सके, then India can definitely have good control over TB. Now with this we come to an end to our today's news. Now we have some very important questions that we are going to see. Okay. So the first question that we have, Karakal, Pakistan is a place in Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan, Kazakhstan. So this place is in news these days, in last few days, and this is a place where you have the 4 options. You have to tell this place is in which state. Okay, so this place is in Uzbekistan. Now let's try and read the important explanation, which will also give us some important insights. Karakal, Pakistan is an autonomous republic within Uzbekistan. So ये एक autonomous republic है उज़्बेकिस्तान के अंदर. It occupies the whole northwestern part of Uzbekistan. The capital is Nukus. Important. At least 18 people were killed in Uzbek region of Karakal, Pakistan, when protests erupted last week over plans to limit its autonomy. So last week it was, as I told you, आजकल न्यूज में है, last week यहाँ पे एक प्रोटेस्ट हुआ था कि इनकी जो ऑटोनॉमी है उसको कंट्रोल करने के लिए, और इसमें लगभग इस प्रोटेस्ट में लगभग 18 लोगों की डेथ हो. Okay, so that is why this particular place is in news. Okay, so the next question that we have is related to this, again, this field medal. Let's try to read this statement and then see whether they are correct or not. The Fields Medal is awarded by International Mathematical Union, an international non-governmental and non-profit scientific organization that aims to promote international cooperation in mathematics. Okay, statement 2. The Fields Medal is awarded every 4 years to one or more mathematicians under the age of 40 in recognizing of the outstanding mathematical achievements for existing work and the promise of future achievements. Statement 3. No woman has been ever won this medal. So in this particular question, because we have just read this particular news, इसमें आप elimination method बहुत अच्छे से use कर सकते हो, because the options are you have to choose the correct one. 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, and all of the above. So why elimination can work here? Because we lastly just saw that a woman from Ukraine has won this award this year. So obviously 3 will be wrong. So wherever you have 3, that will be cut down. So B, C, and D will be cut down, and A will be the correct option.
So A says only option 1 and 2 are correct, and 3 is wrong. Now let's read the explanation. So the Fields Medal, often described as the Nobel Prize in Mathematician, is the prize awarded to mathematician under 40. ये हम देख चुके हैं. The International Mathematical Union is an international non-governmental and non-profit scientific organization. And we saw that Ukrainian mathematician Marian Vizovitska has been named as one of the 4 recipients of 2022 Fields Medal. So she is a woman and she has got this award. And that is why the last statement is wrong. So with this, we come to an end to our today's daily current affairs session. I'll meet you tomorrow with another set of important news. And till then, keep studying, work hard. Thank you so much. Have a nice day, everyone.